नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू एसएम स्मार्ट प्रोफाइल बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 24 अक्टूबर। फ्रेंड्स, ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम ऑर्डर फ्लो और मार्केट प्रोफाइल को यूज करके मार्केट की डायरेक्शन, एरियाज ऑफ एब्जॉर्प्शन, एग्जॉशन, ट्रैप्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड मार्केट प्रोफाइल या ऑर्डर फ्लो को कंबाइन करके एक पॉसिबल ट्रेडिंग डिसीजन की तरफ देखते हैं। फ्रेंड्स, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड हम ट्रेड एडवाइस नहीं देते हैं। प्लीज यूज दिस वीडियो ओनली फॉर लर्निंग पर्पसेस एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। नाउ हैविंग सेड दैट, आज देखते हैं क्या हुआ और हमने कल के वीडियो में क्या कहा था। कल हमने आपको बताया था कि ये एक ओपन ड्राइव ओपनिंग होती है, हुई है, लो वॉल्यूम ट्रेल थी। हमने ये बताया था आपको कि ये एक वॉल्यूम एरिया मेरा इसके और इसके बीच में है एंड आई वाज द मार्केट हैड ओपन गैप अप, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट हियर। टाइम फ्रेम्स मेरे पॉजिटिव थे, हायर टाइम फ्रेम्स जो थे वो पॉजिटिव थे एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग एन अपवर्ड मूवमेंट। हाउएवर आई आल्सो सेड कि ये एक क्लासिकल केस है। This is a classical setup for a short term pullback, and regardless of whatever news is there in the market of India deal, US deal going through, and tariffs coming down, we will go by what the charts say. I also said that we will ignore what has happened in the Mahurat period and consider 20th as our last working day of Bank Nifty. Now, having said that, एक sum up अगर मैं करूं, before I go into details, if I want to sum up today's action in 2-3 lines, तो market ने क्या किया? Market tried to discover higher value, हायर वैल्यू डिस्कवर नहीं कर पाया, यहाँ पे एक पुअर हाई आया, वैल्यू एरिया क्रॉस नहीं कर पाया, इसलिए एक्सेप्टेंस नहीं मिली। एच पीरियड में हमने देखा कि 58, 500, 51, 52 के आसपास other time frame sellers आए थे and those other time frame sellers finished the day. तो आज हमारे को एक शॉर्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिला and it is likely to touch now the other lower levels of maybe 57,600 or this, but we will see that tomorrow when the market opens, when the buyers and sellers come in. Now let me split this for you also. And if you see what happened, now I'll explain in a little detail. The market opened up here. It was a gap up opening. It was out of balance opening. After opening, what happened? The market went straight down. It went straight down, and where did it take support? It took support at this area, which we had marked. After taking support, I came live. I also showed you that the market has gone up over here. I was with you for some time, a little few minutes only. And over here, somewhere here, I said, now is the time that one can take a decision to exit. Those who are very keen not to exit and want to keep holding, you can take a small stop loss, define your stop loss as per your risk taking capability, and go ahead. And the market in the H period came down and reversed. Let us look at the order flow chart also. What happened? Order flow charts दोस्तों अगर हम देखते हैं तो दिस वाज द ओपनिंग। लेट अस फॉरगेट दिस पीरियड। इस पीरियड को ये सब दिख रहा है ये बिल्कुल छोड़ देना है क्योंकि ये मुहूर्त पीरियड का था। ये मेरी क्लोजिंग थी 20 अक्टूबर की। मेरी ओपनिंग कहाँ होती है? My opening happens over here, but where is the support? The support comes at the closing of 20th October. और यहाँ से support लेके this is a point where the volumes were also high, and then I had explained here कि ये एरिया का खास ध्यान रखना है। This is Nifty, let me tell you. This is the area जिसका खास ध्यान रखना है। And exactly from this area the market just reversed। तो ये ओपन रिजेक्शन रिवर्स देके मार्केट ऊपर गई है। यहाँ पे मैंने आपको लाइव में भी बताया था कि ये कैंडल मुझे इतनी अच्छी तो नहीं लगी थी, but still it was okay. And since we had crossed this candle and over here I was thinking that we may start getting some sellers coming in, but I said okay, let's hold on. And we waited for this candle. यहाँ पे मैंने at least I decided to
exit the whatever positions I had. यहाँ एग्जिट करने का एंड रीजनेबल गुड मूवमेंट आई है. उसके बाद मैंने जब देखा तो यहाँ ये वाली कैंडल जो है 955 की, this I marked. So I said that as long as the market is above this candle, you know, I'm going to we will see that the market stays up. But अगर ये candle टूट गया, the market is definitely going to come down. H period में कुछ ऐसा ही हुआ है. The market has started coming down from this level. It broke this and then it did not see the end of the day, क्योंकि एक classical सेटअप तो हमारे पास था ही एक शॉर्ट टर्म पुल बैक का. वो मैंने आपको कल ही बताया था. मार्केट ऊपर गई नहीं, एक्सेप्ट हुई, एक अनफिनिश्ड बिजनेस छोड़ा, एक पुअर हाई छोड़ा, एंड इट केम ऑल द वे डाउन. एंड नाउ इट हैज वी हैव दी सेलर्स इन नाउ. हमारा डेली टाइम फ्रेम जो है वो थोड़ा नेगेटिव है, वीकली न्यूट्रल है, मंथली जो है वो अभी भी पॉजिटिव है. बोथ साइड्स मूवमेंट हो सकती है, बट आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग दैट द मार्केट, इफ इट breaks this area, this area and this area, which I have marked around 746, 750. अगर ये areas टूट जाते हैं तो we may get to see for 57,500 or even correct this poor low. So this is what I can I can just share with you my analysis for Bank Nifty. I don't see the market going up until and unless ये area टूटता है. This I need a convincing break of this area to go up. तो उसके लिए या तो मार्केट गैप अप हो या इतने स्ट्रॉन्ग बायर्स आए that they come and break this and sustain above this. तो वो तो मुझे कल ही पता लगेगा when the market opens and what happens. Let us also see Nifty quickly. Nifty also opened, went up, came down, took support. It was an out of balance opening. वापस ऊपर गया है. ओपनिंग के पास ही होवर करता रहा है, ऊपर नीचे, एंड ये भी एक क्लासिकल सेटअप ही था for a short term pullback. Market did come down around 26,200, and now let us see. Rotation factors are negative. We have the same sort of setup that we have for Bank Nifty, but we'll see how the market reacts, how the buyers come in. Sellers are strong over here. We also have a small support here at this on the 20th. If this breaks, then definitely we see a little fall, but still, Nifty doesn't look like it'll fall so much as Bank Nifty may if the sellers remain strong. So if we only get to confirm when we study the order flow, right? But फिलहाल other time frame sellers Nifty में भी हैं, other time frame sellers buyer में भी हैं. ऊपर जाने के लिए बहुत जोर लगेगा. जब मार्केट खुलेगी तो हम देखेंगे कि मार्केट ऊपर जा रही है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है. अदरवाइज the conviction will more be towards a sell on rise, even if it comes to this area, or even if I see some sellers coming in this area for continuation. We'll see and discuss with you tomorrow. If you want to have a look at the order flow for Nifty, you can see over here the market a gap up opening start शुरू हुई. It opened, it came down, it tested the upper areas, कुछ नहीं मिला उसको, नीचे आया, वापस ऊपर गया, and it started hovering around this area. एक शॉर्ट टर्म हमारे पास पुल बैक का वो था ही था. मार्केट did come down, nothing much to do in Nifty, बोर ही हो जाता बंदा पूरा दिन. But here we got some movement. Bank Nifty played much better. At least there was some movement and some trades that could be taken. So, dosto, thank you for listening to this video. Before closing, I'll once again request you all to trade safely, define your risk before you define your profits. Festival days hain. We have enough time to enjoy our festivals also. Let's see what happens tomorrow. Till that, goodbye and thank you so much.